A very good morning to all of you. I am Manita Malik, Assistant Professor in Doon Valley Institute of Pharmacy and Medicine, Kannar. Today I am here to discuss about the topic evaluation of crude drugs. In the previous lessons we have discussed about the adulteration of crude drugs. Now it's time for checking its evaluation. Evaluation means its quality check. Adulteration. After adulteration, it is necessary step to check and evaluate our crude drugs. So we are starting with this. What is evaluation? Evaluation होता क्या है? Evaluation of a drug means confirmation of its identity and determination of its quality and purity, and also the detection of nature of adulteration. It means we have to confirm whether a drug is a true identity, it's of quality, like it has the main active constituents or not, its purity, and detection of nature of adulteration means which type of, if it is adulterated, then which type of adulteration is present in the drug. So first term is identity. What is identity? Identity means the identification of a biological source of the drug, and it can be done by a qualified and experienced botanist or pharmacognosist. Then comes the quality. What is quality? It refers to the intrinsic value of a crude drug, that is the nature and quantity of the active constituent present in that drug, in which amount the active constituents are present. As if the drug is of inferior quality, then it does not contain the active constituent as it should be in the pure drug. Then next come the purity. Purity means it is the extent of foreign organic material present in a crude drug. What is foreign organic material? Foreign organic material means the unwanted material present in the drug, and it can be done by proper identification and quality assurance. So the three main terms included in the evaluation, that is identity, quality and purity. Now comes why we need this evaluation. Why needed? The evaluation of crude drug is necessary because of the three basic reasons. First one is the biochemical variations in the crude drug, like the changes present in the chemical constituents. Second is the deterioration due to the treatment and storage, like we have discussed in the previous slides in the adulteration. What is deterioration? Deterioration is a type of deliberate adulteration, like substitution and adulteration. This is also as a result of carelessness and ignorance. So basically we can say, to check the adulteration we have to evaluate our drug. Now comes the methods of drug evaluation. There are many methods of the drug evaluation, and these are as, first one is organoleptic. This is also known as morphological evaluation. Then comes the microscopical evaluation, then chemical evaluation, analytical, physical and biological. Organoleptic evaluation is also known as morphological evaluation because in this method we study about its morphology. Morphology means the study of the external characters. Then microscopy means with the help of microscopes which parameters we can study. Then chemical evaluation includes various chemical tests for the various chemical classes like alkaloids, then alkaloidal tests. For glycosides, we have different tests. For the volatile oils, we have different tests. Then the analytical evaluation means there comes the chromatography, UV, IR, NMR techniques. Then the physical evaluation. In the physical evaluation, we have to study various physical parameters like viscosity, refractive index, optical activity, solubility, etc. Then comes the biological evaluation. This is with the help of the microorganisms. So now we are starting with the very first method, that is the organoleptic or morphological evaluation. Organoleptic and morphological evaluation. This refers to the drug evaluation method by means of or organs of sense, in which we have to use our sense organs. What are sense organs? Like we can use our eyes to detect the color, then our nose to the smell, that is the odor,
then taste, the tongue we can use, the texture we can use, how its surface is. It includes the study of the morphology and the other sensory characters. And what is morphology? Morphology, it is the study of the form of crude drugs is called as morphology, and determination of the form of a crude drug is called as morphography. So here I have given a table in which I have mentioned the characters of the drug and some examples. Like if a drug is present, that is cinnamon, and you know that a cinnamon bark have a brown color, so it is a characteristic of the cinnamon. If it drug contain the light brown, then you can say it is exhausted drug or it is adulterated drug. Second is umbelliferous fruits. As we all know, the umbelliferous fruits have a very sweet odor, that is aromatic odor, like of fennel, clove, they have a sweet odor. This is aromatic odor, their characteristics is aromatic odor. Then licorice is a drug that is mulety, that has a sweet taste. Then cinchona, fractured surface, बड़ा रफ surface होता है उसका. Then ravolfia का shape कैसा होता है? Wavy shape. So it is also known as sarpgandha. So we can evaluate our drug by morphological characters, like with the help of size also. For example, in the senna leaf, its standard size is 25 to 60 centimeter in length and 7 to 8 mm in width. If the drug have a leaves that is a small shape or that's a narrow, that is, it's not up to the mark or the standard parameters. So first one in this method is the study of gross morphology. Gross morphology contains the visual examination of the drugs, and these drugs are classified into the following groups according to the morphological parts. A plant has a various parts, like first one is the bark, then underground structures, then leaves, flowers, fruits, seeds and herbs. So first we are starting with the barks. What are barks? आप सबने देखा होगा bark क्या होता है? Outer layer, that is the chal. It includes all the tissues in the woody stem outside the interfascicular cambium, which constitutes the drug. And barks are also collected from the trunk or branches of the trees and narrow strips. Trunk, the main portion of the tree. Examples of barks are cinnamon bark, cinchona bark, ashoka bark, and kurchi bark. And during drying the drug, it undergoes unequal contraction and assumes different shape. So these are the different shapes of a drug after drying. Then comes the underground structures. Underground structures means the modification of stems like rhizomes. Underground there is roots, bulbs, combs, and tuberals. These are the underground structure of the plant. And all underground structure, they are swollen. Like you have seen the potato, it is also swollen. Like ginger, turmeric, they are the rhizomes. They swell due to the storage of food materials like carbohydrates and other chemicals in it. The examples of the underground structure are the ginger and the turmeric. Then comes the leaves. As you all know, leaves are also the most important part of the plant, and it also helps in the identification of the drug. How? Their shape, their margin, their base, the apex, the venation of leaves. Each leaf have a different shape, different margin, different base, apex and venation. Like all you have seen, the mango tree have a different shape of leaves, amla tree have a different shape of leaves, then tulsi. So every plant have their different shapes of leaves. Here I have given the senna leaves, picture of senna leaves and the tulsi leaves. Some leaves are oblong, some leaves are flat, some leaves have dented margin. So there are different forms of leaves. Then comes the flowers. Flowers, these are the, what are flowers? These are the reproductive parts of the plant, and they possess different shapes, sizes and colors also. Like hibiscus flower have a different shape, like the funnel shape. Vinca rosea flower has a different shape. Sunflower has a different shape. So there are different shades of flower. And here it is given the picture of a saffron flower. Saffron extracted from the flower, which is used as an essence in the food. Saffron is here, it is the saffron is collected from the flowers, and that is used in the essence in the food. And biological source of saffron is crocus
sativals. Next come the fruits. What are fruits? They are arise from the ovary and contain the seeds, and every fruit have also have a different shape, like it can be a globular, it can be oblong, or it can be ellipsoidal in the shape. Here I have given some example like almond and amla. Both the fruits have a different shape, oblong, and this is somewhat rounded in shape, amla. Then comes the seeds. What are the seeds? Seeds are developed from the ovules in the carpels of the flowers, and they are characterized by the hilum or the micropyle. These are the points of the attachment. Here they are given like lincid and nux vomica. They have a also different shape and sizes. First one is a study of gross morphology. Then now it comes the B part in this. This is a study of the sensory characters. Sensory characters, again I'm repeating, with the help of our sense organs. We have to evaluate its color, texture, odor and taste. And these are useful in the evaluation of drugs. So color, the crude drugs may acquire a variety of colors, and the color of the crude drug may vary from white. It can be yellowish gray, yellowish brown, reddish, orange, brownish black. So many colors are present in our fruits and in our drugs. The fruits and the seed drugs have a different colors, while bark have a different color. As you all know, barks are mostly brownish and black in color, but fruits have a so many colorful fruits are there. Like apple is red in color, grapes are green in color. Then internal and external color of the bark also varies. Like internal color of the bark is always little lighter than the outer one. Outer one is darker brown and internal one is light brown. Then some drugs are green in color when dried in color, and when dried in shade they acquire a different color, like they become pale and bleach when dried in sunlight. For example, it is given the Terminella chebulia. When it is fresh, it is of green color, and when it is dried, it becomes brown color, darkish brown color. This is Terminella chebulia is hurred. Then comes the odor. What is odor? That is the smell. Odor of the drug, it may be either distinct or indistinct. It means you can characterize it or not. The term used for the drugs odors are the aromatic, balsamic, spicy. It is related to the smell. आपको smell कैसी आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है तो aromatic, and you can identify it. It means the drug has a characteristic smell. तीखी आ रही है तो that is spicy. For example, mentha, clove are some of the example for the drug which have a distinct odor. Mentha means पुदीना. They have a, कहीं भी पुदीना रखो तो दूर से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे पुदीना पड़ा है, because it has a peculiar odor. बहुत ही refreshing odor होता है मेंथा का. Then clove means long. लौंग का भी एक अलग सा करेक्टरिस्टिक, एक बहुत ही शार्प ऑर्डर होता है. क्लोव खाने में अगर लौंग डाला है तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ अ क्लोव. देन कम्स द टेस्ट. Taste can also vary. It can, the general terms which are used in describing taste are acid, like sour, khatta. Saccharine means sweet, like if a मीठा होगा तो it is sweet. Saline means it is salty, नमकीन. Then alkaline, bitter, और you can also say tasteless. अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि इसका आपका फ्रूट का या कोई भी क्रूड ड्रग का टेस्ट खट्टा, मीठा, सॉल्टी, तीखा कोई भी नहीं लग रहा है तो you can write it down as tasteless. Some examples are there. For example, mucilaginous, like starches. कुछ चिपचिपा सा टेस्ट आ रहा है, ऑयली टेस्ट आ रहा है तो लिंसीड ऑयल का ऑयली टेस्ट होगा. पोमीग्रेनेट है, कटेचू है तो it is a characteristics of pomegranate and catechu that they must have an astringent taste. That is the कुछ थोड़ा तीखा टेस्ट होगा. जिंजर का पंजेंट, बहुत ही शार्प टेस्ट. कोकोआ एक्रिड टेस्ट. So these are the some characteristics of their taste also. Then comes the texture. टेक्सचर मीन सरफेस उसका कैसा है आप देख के बता सकते हो. समटाइम्स ड्रग कैन बी एग्जामिन बाय द कंसिस्टेंसी, द टेक्सचर एंड नेचर ऑफ द फ्रैक्चर. एग्जांपल, कोलिसिन कैन बी कंप्रेस्ड इजीली सिंस इट्स पैरेन्काइमा इज लूज. आप जब उसको प्रेस करके देखोगे तो वो प्रेस हो रहा है, तो इससे पता चलता है कि इसके अंदर कैसा उसका सॉफ्ट है या हार्ड है टेक्सचर. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन. ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में आपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पढ़े. बार का शेप कैसा है, कलर हो सकता है, लीव्स कैसे होने चाहिए, उसका शेप एंड साइज, फ्रूट्स का कलर कैसा हो सकता है, देन उसके कलर, ऑर्डर, टेस्ट एंड साइज. आपको स्टैंडर्ड सबका हमें गिवन होता है
कि ये सब स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं। अगर कोई भी ड्रग, आपका क्रूड ड्रग, उन सब पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो you can say that your drug is adulterated. So by the morphological evaluation, all these parameters you can study and evaluate whether your drug is adulterated or not. Now we are coming to our next method of evaluation, that is the physical evaluation. Physical evaluation means we have to study the different physical parameters, that is the elasticity in fibers, viscosity of a drugs, melting point, their boiling point, their water contents, etc. And these are the some important parameters which are used in the evaluation of a drugs. And in this physical evaluation, UV light can also be used for determining the fluorescence of the extract of the some drugs. So physical constants are extensively applied to the active principle of the drugs like alkaloids, volatile oils, and fixed oil. In chemical classification, in earlier slides, we have discussed what are alkaloids, what are volatile oils, and fixed oils. So some of them पैरामीटर्स आर मॉइस्चर कंटेंट, कितना मॉइस्चर है प्रेजेंट, नमी कितनी प्रेजेंट है, विस्कोसिटी, कितना आपका विस्कस है, गाढ़ा है आपका सॉल्यूशन, देन मेल्टिंग पॉइंट, कब वो मेल्ट हो रहा है, कौन से, बिकॉज क्रूड ड्रग्स हैव अ वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट, देन ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एश कंटेंट, extractive values, volatile oil content, RF value, foreign matter, all these comes under the physical parameters. So let's study first parameter, that is the viscosity. Viscosity means thickness कितनी है आपके solution की. Viscosity of a liquid is constant. It is always constant at a given temperature, and so it is an index of its composition. For example, liquid paraffin have a viscosity always less than 64 centistocks. That is the unit of viscosity. Its viscosity is always less than. If the viscosity you find the liquid paraffin is more than 64, then you can say that it is liquid paraffin adulterated because it has more viscosity or less viscosity. So here a picture is given like गाढ़ा, आपका कैसा गिर रहा है सॉल्यूशन उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसका विस्कोसिटी कैसी आ रही है, उसकी फ्लो कैसा है आपके फ्लो लिक्विड का. Then comes the moisture content. Moisture means कितना आपके ड्रग में, क्रूड ड्रग में नमी कितनी प्रेजेंट है. Presence of a moisture in a crude drug can lead to its deterioration due to either activation of certain enzyme or growth of microbes. As you all know, अगर आपने कोई भी ड्रग बाहर रख दिया ऐसे ओपन एयर में, तो बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑल्सो योर ड्रग कैन डिटोरेट, खराब हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं. एंड मॉइस्चर कंटेंट, इट कैन बी डिटरमाइंड by heating the drug at 150 degrees Celsius or 120 degrees Celsius in an oven to a constant weight and calculating the loss of weight. आपने थोड़ी देर के लिए आपको ओवन में आपने ड्रग को रख दिया और आप उसका जब तक कांस्टेंट वेट नहीं आता आप रीडिंग्स लेते रहते हो, और जो लास्ट में फाइनल रीडिंग आएगी, इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग को माइनस करके देखोगे, जितना परसेंटेज आएगा दैट इज योर मॉइस्चर कंटेंट. देन कम्स द मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? It is one of the parameter to judge the purity of a crude drug. It is very important parameter because crude drugs have sharp melting point. एक ऐसा point आता है जहाँ पे आपका ड्रग एकदम से मेल्ट हो जाता है, like उसका स्टेट चेंज हो जाता है solid to liquid. The purity of a following crude drug can be ascertained by determining their melting point in the range shown against each of them. आपके हर एक स्टैंडर्ड ड्रग का लिखा होता है कि ये उसका, फॉर एग्जाम्पल कोका बटर है, कोका बटर 30 to 33 के बीच में एकदम से मेल्ट हो जाएगा. सो यू कैन also ascertain whether your drug is adulterated or not by checking their melting point. Then comes the optical rotation. What is optical rotation? Optical rotation क्या होता है कि अगर आपका ड्रग रे ऑफ लाइट पास की जाती है आपके ड्रग के ऊपर से, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस तरह रोटेट कर रहा है, आइदर टू राइट और आइदर टू लेफ्ट. Many substances of biological origin have a chiral center. Chiral center होता है सब में, and can rotate the plane of polarized light either to the right or to the left. So the extent of the rotation is expressed in degrees, plus indicating the rotation to the right and minus indicates the rotation to the left. अगर आपके किसी भी ड्रग के नीचे प्लस साइन लिखा हुआ है तो इट मीन्स उसने कहाँ रोटेट किया है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट. अगर लेफ्ट है तो माइनस लिखा होगा, इट मीन्स the drug rotates the plane of polarized light to the left.
So such compounds are optically active and hence called as optical rotation. And substances that rotate the plane polarized to the right, that is the clockwise, are dextrorotatory small d, and which towards the left hand side, that is minus, it is known as levorotatory small l. So there are measuring optical rotation helps in determining whether a substance is optically active or not. It can also check the purity, quality and strength. Like this, every drug has a specific optical rotation, like eucalyptus has 0 to plus 10 degree, honey plus 3 to minus 15 degree. These are the optical rotation of this drug. Then comes the refractive index. Refractive index means when a ray of light passes from one medium to another medium of different densities, it is bent from its original path. जब कोई भी लाइट आपकी पास हो रही है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के जाने पर वो अपना पाथ ओरिजिनल पाथ से वो चेंज कर लेती है. एंड दिस रिफ्रैक्टिविटी इज मेजर्ड बाय द रिफ्रैक्टोमीटर. It is also refractive index is also fixed always. For example, Arachis will have a refractive index of 1.4678 to 1.4698. Then comes the ash content. What is ash? Ash क्या होता है? Basically, ash is राख. जब आप किसी भी चीज को जला देते हो तो जो बाद में आपका रिमेनिंग रेसिड्यू बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? एश. द रेसिड्यू रिमेनिंग आफ्टर इनसिनरेशन ऑफ अ नोन क्वांटिटी of the air dried crude drug is known as ash content of the drug. The residue remaining after incineration. Incineration means after जलने के बाद जो आपका रेसिड्यू रह जाता है of a known quantity of the air dried crude drug. Known quantity means फॉर एग्जाम्पल आपने 2 ग्राम ऑफ ड्रग रखी है, आप पहले ही उसका वेट मेजर करके रखोगे मफर फर्नेस में. इट इज नोन एज द एश कंटेंट ऑफ द ड्रग. And the determination of ash value is very useful for detecting the low grade products. अगर आपका cheap quality का product है, exhausted drug है पूरा के पूरा, exhausted means उसके अंदर से जो active constituents हैं वो बाहर निकाल लिए गए हैं. That is in case of the umbelliferous fruits like fennel, clove, or there is an excess of sandy or earthy material present है अगर उसके अंदर, and different ash values are calculated for such purposes. Ash values different types की होती हैं like total ash, acid insoluble ash, acid soluble, water soluble ash and sulfated ash. So now we are going to discuss one by one each of the ash value. First one is a total ash. What is total ash? It is useful for detection of the crude drug mixed with various minerals, like example sand, soil, calcium oxalate, chalk powders or other drugs with different inorganic contents to improve their appearance. अगर आपके ड्रग में ज्यादा सॉइल, सैंड मिक्स कर दिया, रेत, सॉइल, मिट्टी, कैल्शियम ऑक्सलेट या चॉक पाउडर, कुछ ऐसा या कोई भी अदर इनऑर्गेनिक कंटेंट, क्योंकि आपका अगर आपको क्रूड ड्रग की अपीयरेंस को किसी ने बढ़ाना है, अडल्ट्रेशन के लिए ये चीजें यूजुअली मिक्स की जाती हैं, वेट बढ़ जाता है बिकॉज इससे, लाइक सैंड, सॉइल, कैल्शियम ऑक्सलेट, चूना मिला देते हैं बीच में. सो टोटल ऐश की हेल्प से आप डिटेक्ट कर सकते हो आपके ड्रग का प्योरिटी. एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर used for the total ash is not more than 450 degrees Celsius. It is because the fact that at higher temperature volatile alkyl chlorides may be lost. हम क्या करते हैं, एक मफर फर्नेस के अंदर भट्टी लाइक सब होता है, उसके अंदर रख दिया हमने और उसका टेम्परेचर सेट करते हैं 450 डिग्री सेल्सियस. उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए बिकॉज अगर वॉलेटाइल मैटर है आपके ड्रग में तो वो उड़ जाएगा, उससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा. Then comes the acid insoluble ash. Acid insoluble, as it is clear from its name, acid में वो insoluble ash आपका. Acid insoluble ash means ash insoluble in dilute HCl, dilute hydrochloric acid, and its value is higher than the total ash. The majority of the crude drugs contain the calcium oxalate, whose quantities varies frequently. Therefore, total ash of a crude drug vary within wide limits of for specimen of a genuine drug. For example, rhubarb, total ash ranges from 8 to 40%, and in this case, the determination of acid insoluble content is more preferable because acid insoluble ash gives you exact figure. Then comes the sulfated ash. Sulfated ash में क्या होगा, सल्फर यूज किया गया. This ash is produced after treating the drug with sulfuric acid to get the sulfate salts. Percentage
Ash is calculated with reference to the air dried sample. Air dried sample means आपने स्टार्टिंग में कौन सा कितना सैंपल लिया था. Temperature used for procedure calculating the sulfated ash is always more than 600 degrees Celsius. For example, ginger have a acid insoluble ash is 3% and ginger total ash is 16%. Like this, ऐसा आपका जैसे भट्टी में जलता है कुछ, ऐसे ही मफर फर्नेस के अंदर इतना हाई डिग्री पे आपका क्रूड रक जलता है और जो राख बचती है वो ऐसा दिखती है आपको. Then comes the extractive value. What is extractive value? आपने किसी भी ड्रग में से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट किए हैं तो वो कितना आया आपने वे करना है. दैट कम्स और दैट गिव्स द आइडिया अबाउट एक्सट्रैक्टिव वैल्यू. बिकॉज एक्सट्रैक्टिव वैल्यू क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर लाइक वाटर में, आपका पेट ईथर में, एल्कोहल में कितना एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है तो वो आप कैलकुलेट करते हो. In the crude drug, sometimes the active chemical constituent cannot be determined by the normal procedure. And so in such cases, water, alcohol, ether soluble extractive values are determined for the evaluation of such drug. Examples are water soluble extract like aloe vera, alcohol soluble like ginger. And आप सब extractive value कहाँ से निकालते हो? So, कर सकते हैं मेथड सॉक्सुलेशन से कर सकते हैं, सॉक्सर अपरेटर से, या वॉलेटाइल ऑयल है तो क्लीवेंजर अपरेटस आप यूज करके वॉलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो एंड कंपेयर कर सकते हो आपके स्टैंडर्ड ड्रग में इतना वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट आना चाहिए. अगर वो नहीं आ रहा है तो इट मींस योर ड्रग इज एडल्ट्रेटेड. तो volatile oil content, some crude drugs are standardized on the basis of the volatile oil content. स्टैंडर्डाइजेशन उसका हो रखा है पहले से ही कि इसके अंदर इतना, फॉर एग्जांपल क्लोव है, क्लोव में मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इज यूजिनोल, तो उसका परसेंटेज पहले से ही गिवन है, इट इज इतना परसेंट क्लोव में यूजिनोल होना ही चाहिए. बट अगर जब आप अपने क्लोव का ऑयल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो उसमें से यूजिनोल उतना नहीं आया है तो इट मीन्स कि आपका ड्रग एडल्ट्रेटेड है. तो वेट क्वांटिटी ऑफ द, इसमें करते क्या है, वेट क्वांटिटी ऑफ द ड्रग लेते हैं, ऑलरेडी प्री वेट होता है, 15 ग्राम लिया, 20 ग्राम लिया, कितने ग्राम से आपने ड्रग लिया है, इस बॉइल्ड करते हैं विद वाटर इन ए राउंड बॉटम फ्लास्क fitted with the clevenger apparatus and the distillation collected is graduated into the volatile oil. These are the volatile oils and this is shown the diagram of essential oils. Next come the RF value. RF means in the chromatography, RF is calculated. Chromatography, it is used for both qualitative and quantitative evaluation of the crude drugs. इसमें आप qualitative भी कर सकते हो और quantitative भी कर सकते हो. Quality means कौन कौन से present है, quantity कितने amount में present है, and RF value refers to the ratio. What RF value gives you? It refers to the ratio of the distance traveled by the solute to the distance moved by the solvent on a thin layer absorbent. Basically, in thin layer chromatography TLC, you have to calculate the RF. And how you can calculate RF? Distance traveled by the solute upon distance traveled by the solvent. This is the RF value. Like अगर आपका ड्रग आपका इतना है, आपने सॉल्वेंट यहाँ तक राइज कर लिया है, लेकिन जो आपका सैंपल था यहाँ तक राइज किया है, तो इसका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सैंपल से आप RF वैल्यू आप उसका निकाल सकते हो. एंड RF इज ऑलवेज लेस देन 1. So this is the refractive TLC plate and you have to mark there over here. For example, अगर आपके पास, आपको पता है एक क्रूड ड्रग जो है वो प्योरीफाइड एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, जो आप मार्केट से लाए हो आपको चेक करना है, तो आप दो स्पोर्टिंग साथ साथ लगा सकते हो. जो आपका स्टैंडर्ड ड्रग है यू कैन मार्क इट हियर एज ए एंड देन बी. ए आपका कितना ऊपर रन करता है एंड बी कितना करता है, कंपैरेटिवली यू कैन कैलकुलेट देयर RF. और आपके RF कैलकुलेट करने से आप चेक कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो कि आपका ड्रग प्योर है या नहीं है. द लास्ट पैरामीटर इज फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर. क्या होता है फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर? फॉरेन मीन्स कोई बाहर से चीज आई है, मतलब आपका जो क्रूड ड्रग है उसमें जो चीज है आपको चाहिए वो नहीं है, बाहर से कुछ आ गया. द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन और द ऑर्गन्स अदर देन द रिक्वायर्ड वन आर कॉल्ड एज फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर. उसको हम फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर बोल रहे हैं. और फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकता है? कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल दाल में कंकर, राइस में कंकर दिख जाते हैं आपको, जो स्मॉल कोरिएंडर है, धनिया, साबुत धनिया देखोगे तो उसमें दिख जाता है. लाइक इंसेक्ट्स आ सकते हैं, कुछ मोल्ड्स, अर्दी मटेरियल हो सकता है, एनिमल का एक्सक्रीटा, कुछ भी आपका जो ऐड हो गया
So each crude drug has its own limits for the presence of foreign organic matter. अगर आपने पुराने टाइम में देखा होगा दालों को कनक को साफ करते हैं, उसमें से कंकर, उसमें से क्या निकाल रहे हैं हम, वो सब चीजें क्या है, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर है। तो और हर एक ड्रग का एक स्पेसिफिक कंटेंट होता है, एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर अगर उसमें है तो आप उस ड्रग को बोलोगे अडल्ट्रेटेड, अदरवाइज विद इन अ लिमिट्स है। बिकॉज कई बार क्या होता है हवा से ही कुछ आ गया मटेरियल, थोड़ा बहुत आ जाता है, तो आप उसको अडल्ट्रेशन नहीं बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज गिवन द गार्लिक एंड सैफरन शुड नॉट कंटेन मोर देन 2% ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर। अगर 2% से ज्यादा है तो उसको आप क्या करोगे, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग। और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, पहले हम जो आपके पास जितना ड्रग है उसका वे कर लेते हैं, फिर उसको साफ करने के बाद बाय योर नेक्ड आईज आप देख सकते हो क्या क्या है उसके अंदर से, एक्स्ट्रा फॉरेन मैटर बाहर निकाल दोगे और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा आप उसको कैलकुलेट करोगे। तो उसका डिवीजन से उसको परसेंटेज आप निकाल लोगे कि हमारा ओरिजिनल क्रूड ड्रग इतने वेट का था और जो आया है अब वो इतने का है, तो आप डिवाइड करके आप उसको इनटू 100 करके आप परसेंटेज निकाल सकते हो फॉर ऑर्गेनिक मैटर की। सो दीज ऑल आर द पैरामीटर्स of the physical evaluation. I am again repeating the parameters. First one is the viscosity, then moisture content, कितना प्रेजेंट है, उसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एश कंटेंट, एश कंटेंट में टोटल एश, एसिड इंसोल्यूबल एश, वाटर सोल्यूबल में कितना है हो रहा है वो एश, देन सल्फेटेड एश। आफ्टर एश एक्सट्रैक्टिव वैल्यू कितनी है, आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कितना एक्सट्रैक्ट आउट होके आ रहा है, देन आरएफ वैल्यू, आरएफ वैल्यू कितना है, ये क्रोमेटोग्राफी में हेल्प करते हैं, देन द फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर। सो ऑल दीज आर पैरामीटर्स कम्स अंडर द physical evaluation. So for now we have discussed the two types of evaluation method, that is the morphological organoleptic evaluation and second one is the physical evaluation. So thank you for watching the video.